Good evening, everybody. I'm Sayukta from Vistas Media, your host for today on Hair All Issues Resolved YouTube channel. We go through a lot of look beautiful related issues as we grow up, but little do we realize that it's our hair that's our crowning glory. Our hair symbolizes health and personality. Gorgeous and healthy hair is an instant confidence boost. To guide us on how to take care of our crowning glory, that is our hair, we have with us an expert dermatologist, Dr. Urvashi Chandra, live from Chandra Clinic, New Delhi. Dr. Urvashi Chandra practices at Chandra Skin Clinic in Pitampura, Delhi. Dr. Urvashi did her MBBS, MD, Skin, VD, and Leprosy. Dermatologist, hair transplant surgeon, she is, and she has been a hair specialist and transplant surgeon with a leading chain of hair transplant clinics, DHI, for 5 years. She is certified by the European Academy of Dermatologists and Venereologists for acne as well. Dr. Urvashi Chandra has been the consultant dermatologist at Asian Roots, one of Delhi's best aesthetic dermatology clinics. She is a qualified diplomat of the American Board of Hair Restoration Surgeons, a leading board of the USA. She has been a speaker and trainer at multiple national and international conferences on hair loss and transplant. She is a member of IADVL. Dr. Urvashi is also certified to be artificial hair implants. She does that, and her area of excellence is trichology, hair fall management, and hair transplants. She has been doing the PRP therapy for hair loss. A very good evening to you, Dr. Urvashi. It's a pleasure to have you with us. Warm welcome. Good evening to everyone, and it's my pleasure as well to be here. Yes, and today we are going to talk about hair loss and the management of hair. As you know, as we all know, that hair is one of our biggest concerns because every day we lose hair. Hair fall is so normal with all of us, but then we don't realize, doctor, that when it's normal and when it's not. When's the time to be Absolutely. concerned? Please elaborate on that. Sure. So, yes, that is an excellent point that you've picked up. When is it normal and when is it not? In fact, that's one question that so many of my patients ask me. They come to my clinic and tell me that we're having excessive hair loss. And they really cannot. So, this excessive hair loss is something that really cannot be defined because hair loss is something that can be expected all year round. Our hair always undergo a cycle of growth and fall. So we can expect our hair fall almost 30 to 50 strands per day. We can expect that we will be losing hair. However, in certain circumstances, such as suppose we've been ill some time back, or we've gone through certain stress period, in or change of weather or season or change of cities. In such conditions, we do suffer from hair loss, which is a little more than in excess. So my patients tell me that we can see hair everywhere. Every time we comb, there's a lot of hair fall. We see hair on the pillow, we see hair on the room floor. People are telling us that we can see your hair everywhere. Every time they wash, they can see a lot more hair than regular. So, like I said, this excessive hair loss can happen in case you've been ill recently or gone through some stress period. However, this is something that should settle on its own within a month or at the max 1.5 months. Now, in some people, this excessive hair loss continues beyond a time which is not acceptable. So, if, like I said, if it's happening for 1 to 1.5 months, it's acceptable because after any illness, our hair goes under this non-growing phase. So, after Okay. 1 to 1.5 months, it starts shedding off on its own. However, it should stop also on its own. If it does not stop in some time, then that's when we need to see a dermatologist. And one of the most common reasons why it would not stop on its own in some time is nutritional deficiency. So a Okay. lot depends upon your diet, your lifestyle, how well you are able to recover from any illness or stress, and how your hair behaves, responds to that stress or that illness. So if your nutritional content in the body is appropriate and if your diet is up to the mark, then even in illness you will have a little bit of excess hair fall, but not too much. So if it is way too much and then for a very lengthy period of time, that is when you should be consulting a dermatologist, because in that case it means that you are losing a lot more extra hair than what is growing back. So if Right. you're losing in excess of what is
growing back, then in that case, you will slowly start losing density. So if you think that beyond 1 to 2 months you're losing excessive hair, then that's the time when you meet a dermatologist. Right. We often say that, our hairs or our skin actually reflects how healthy we are from within. Exactly. If we are good, we are healthy, we maintain a healthy lifestyle, then that will get reflected on our hairs, on our skin. But if not, then there definitely is some problem. And as you very rightly said, if the thing continues for more than 1.5 or 2 months, then we should be concerned and consult a dermatologist. Now, doctor, we would also like to understand what are the general causes of hair loss? Now, coming to our today's, let's say, lifestyle, I would say one of the most common reasons for hair fall is nutritional deficiency, because our eating habits are not in place currently. What I'd see with a majority of the younger generation specifically, I'd say that the eating habits are not correct. There's a lot of eating out, and we are skipping on our, healthy portions of veggies and salads and fruits and protein also, because if you're consuming a lot of junk food, then that is something that is very very low in nutritional content. And and the Yes. thing is that our hair, like any other organ of the body, needs proper nutrition to function or perform at its best. So one of the most common reasons I would say is that. The other major reason is stress. Again, work stress, it can be any other personal stress. But now that I am noticing that people have started, they have developed a lot of work stress because of long working hours. Even young children have a lot of study pressure on them, so stress is again another leading major factor. The third factor I would say is genetics. So if you have a family history of hair fall, if Mhm. your father or your mother or anybody from your paternal or maternal side, sometimes people say, okay, my father has a full head of hair, why am I losing hair? Or my mother's hair is okay, why am I losing hair? But the thing is that from either side, anybody in their family, if they also have hair loss, then you can also get some hair. You can, in that case, it means that you are also prone to the process of hair loss. Now, when it will start in you, that again depends upon your diet and lifestyle. So, again, we come down to the same thing. There are people who have family history of hair loss, their fathers have hair loss, or their maternal uncles have hair loss. But if your Right. lifestyle is in place, if your diet is in place, the same hair loss will start in you in 40, at the age of 40. At the same time, if you're not good with your diet and lifestyle, the same genetic hair loss will start at 20. So the age at which the genetic hair loss will start in you, that also depends upon your lifestyle. So these are the most common reasons, followed by hormonal imbalances in men as well as women, thyroid disorders, nutritional deficiencies. These are the common factors. Along with that, sometimes we are not able to find out why exactly the a person is having a lot of hair fall. So I would say there are so many toxins in the environment. There's so much pollution. There's pesticides in Exactly. our food. So nothing that we're consuming is pure. Our Hmm. water is not clean. Our food is not clean. Our air is not clean. What we are breathing. Right. So because everything is so polluted, that can also be a factor which is causing hair fall. I completely A lot agree of with other you on factors are that. there as well, Right. but these are the major ones. Okay. And as you very rightly said, it's very important to eat right, eat a balanced diet. Now, the thing is that, as you said, we may go through some deficiencies that may cause hair fall. Now, the question is that many times, without even understanding that are we really, going deficient on certain nutrients or not, we will just go over the counter, buy some supplements because we are so aware these days, right? We know that, okay, our hairs are shedding. That means we are, lacking maybe zinc, or I'm going through some iron deficiency, or biotin is what I need. I'll never go and get it checked. I'll never go and land in front of a dermatologist or trichologist and ask that, see what's wrong with me. I'll just Correct. go the first thing to a chemist, ask for a supplement, and start popping it. How good or a bad practice it is? Is it a healthy thing to do? That I would say is not at all a healthy thing to do, because we now have like data on the fact that vitamins also have to be given very, very carefully. We don't Hmm. want to overdo any vitamin. And there are combinations of vitamins available in the market, which are not really a very good combination, because the vitamins are actually they are, let's say, interfering with each other's absorption.
So we need to very carefully select a correct multivitamin in which all the vitamins are getting absorbed. They should be in right quantities. They should be helpful to the hair. And the practice of kind of stuffing in a lot of things into a single tablet or capsule isn't the very good thing for hair, or it's not very good for your bodies as well. So I would not suggest that you should just randomly go and pick up any vitamin. There are tablets of biotin available in the market which have something close to 10 milligram of biotin in them, which is not ideal. It's not required. So which is why I would suggest, whenever you have hair fall, you should be consulting a dermatologist who can give you a right supplement according to what they think your problem is. So if a woman comes to me and I see that she's looking very pale, I can probably estimate that she might be having some hemoglobin deficiency. Then Mhm. I will give her a multivitamin that has a major content of iron in it, along with some other vitamins. If I feel that a person has come to me which has like a lot of joint pains or backache, or pain in the heels, then I can estimate that maybe he or she is deficient in vitamin D. So I will be giving my multivitamins according to that. So it is only after a doctor takes proper history from you and is able to estimate what kind of deficiency you might be having, or the doctor might also be prescribing some tests for you, because Mhm. we don't want to overdo any vitamin. There are vitamins that can cause toxicity also, like vitamin D, vitamin Right. A, vitamin E, which are fat soluble vitamins. If they are taken in higher doses than required, then they can cause toxicity also. So it is best that we first consult a doctor and then pick up the medicines. Exactly. So the bottom line is excess of everything and anything can be bad. So viewers, please be careful. खुद से जाके न्यूट्रन या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. पहले डॉक्टर के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस, हेयर फॉल हो रहा है. Another thing, doctor, which is very important nowadays, as you very rightly said, that our lifestyle is to be blamed because we are not eating properly, we are not sleeping properly, we are not working out properly, and whatever we are consuming, whatever is going in, is not pure. So now another thing associated with it is that we are also going for many other salon based treatments for our hairs. I mean, nobody these days are having virgin hairs. They'll have color on them, or they'll iron their hairs regularly, or they'll have some perming or rebounding or keratin, some treatment on their hair. Correct. Now, we can't completely, go out of it. I mean, okay, we'll have to live with that, but what's the right way of doing it? All right. So salon treatments, I would not say that they damage everybody's hair, because Mhm. I have seen people for whom salon treatments work quite well. But when you are already having excessive hair fall, or yeah, so basically when you're having excessive hair fall, that is absolutely not the correct time to take a keratin treatment or a rebonding or a relaxing. So because what happens is that when we're having excessive hair fall, that is when our hair quality also deteriorates. And exactly when our hair are at their weakest, that is Mhm. when we go ahead and take a rebonding treatment, which makes our hair even weaker. So ideally, when you have a lot of hair fall, or when you think that your hair is breaking a lot, your hair strand is very thin and brittle, that's not the time to take a parlor treatment. That's in fact the time to start consulting a dermatologist. Start with your multivitamins, start with proper hair medications. And once your hair fall is under control, and you think that your hair fall is not, I mean, you're not having hair loss, you're not having hair thinning, and then that is the time when even your doctor will allow you to do take a keratin treatment, or you will tell you that okay, now you can take a straightening once in a while. Also, as far as the color is concerned, I specifically guide my patients on how to apply a color, because what happens is when we go to salons, they almost take 45 minutes to an hour to apply the color, and then they leave on the color on your hair for another 45 minutes, which is way too long. So the hair that has, the hair from which they started, the hair where the color was applied the first, Mhm. that part of the hair actually gets the color for something close to 1.5 to 2 hours, which is way too long. So I have seen people after a color, their hair has become very brittle and dry, and almost it seems like it's burnt out. So Mhm. you have to be very careful in the color that you choose. Also, the professional who is applying it. I advise my patients, if you just have to do a root touch up, try and do it at home.
where you can apply the color within 10 to 15 minutes and then keep it on for another 10 to 15 minutes and then wash off. So obviously we all are doing some or the other kind of parlor treatments, but what's important is to just try and keep it to the minimum. Not take parlor treatments when you're already having excessive hair fall. Consult a dermatologist, check with them whether your scalp is in a healthy state or your hair is in a healthy state to even tolerate that parlor treatment, because parlor treatments are not soft, they're hard, they're going to they need your hair to be already strong. They are not going to further strengthen your hair. It's a very common misconception that keratin treatment is going to add keratin to your hair. No, I mean, it's like if you want a tree to become greener, you have to put the manure into the roots. You can't rub manure onto the leaves and expect the tree to become greener. That does not happen. So what's Right. important is, if your hair is weak, you have to eat the right food and not, you have to eat the protein. You don't have to apply the protein on your hair. That will not help, but that's something that people don't understand, but which is why we are here to guide everybody. So please consult a dermatologist before going in for any treatments. Now, as you very rightly said, it's not important to apply what you eat. It's important to what you're intaking, what's you're eating. It's important to eat right. There's no point in applying those things on your hair. Now, another very big misconception is that by applying egg on your hairs, or by applying other things on your hairs, you will actually make your hair grow long or beautiful or black again. So please burst this myth for us. I mean, how good or bad, again, these home remedies are, because a lot of people do that. Even before going to a doctor or before going to anybody else, they'll first run inside their kitchen when they are, going through this hair shedding or hair loss phase, and they try to fix something from the Dadi Kanuska. So how good or bad these can be? So, as far as the home remedies are concerned, tell my patients, don't apply anything acidic on your hair. So, don't Okay. apply curd, don't apply lemon, don't apply fruits or such stuff. Yes, you can apply eggs, not because they are going to add protein to your hair, it will not add protein to your hair, but because it has a lot of yolk in it, which is oily. Yolk is an oily stuff, it has fat. So, temporarily, your hair gets conditioned. It acts like a conditioner. Again, you can use oil, it acts like a temporary conditioner. You can use yeah, oil and egg. I think they should be good. Basically, you need to avoid curd, which is very, very commonly used by people. And the other thing is onion juice. I think that's again something that has really caught fire. So that is something that people are applying a lot, and it's making their hair even more dry. So I would recommend, don't apply acidic things on your hair. You can apply moisturizing things, but not acidic things. That's Yes, what I'll I'm say. sure you have taken a note Before of your it. head So wash, you can do that. An hour before your head wash, you can apply oil. An hour before your head wash, you can apply egg if you like. But yes, not dahi or onion juice. okay, fair enough. Now, doctor, another thing, because continuously you're emphasizing in the need of, eating right or eating well or eating healthy. Now, these days, a lot of diets are into, trends. So people will crash diet. They'll fast for, say, 16 hours and eat for only 8 hours, or they'll completely omit carbs or, other things from their thali. Again, how healthy these diets can be specifically for our hairs. Okay. So basically, whenever we lose weight, no matter how healthy diet we have kept, in the process of losing weight, if we have lost weight, we will lose some hair, because whenever we lose weight, our body senses it as an emergency thing. Something, because the main let's say internal the character of our body is to eat and save for the future. That's the basic principle behind Right. all living organisms, that we consume food and we save for the future. So Hmm. that's like a security check kind of a thing. So when we are losing weight, our body thinks that there is some kind of an emergency coming up. So the first thing that the body does is it stops growing hair, because hair is not a vital organ. So Right. whenever we are losing weight, the first thing that our body will do is it will put a brake to the hair growth, because that is not where our body wants to use up the vitamins when we are already in the weight loss process. Because Mhm. our body, like I said, does not see our hair as a vital organ. It is important for us,
but it's not a vital organ. We can survive without it also. So Exactly. our hair will stop growing. But in the long run, if you've lost weight, and if your weight is under control, then that in turn will lead to regulation of your hormones and a lot of other health benefits, which will give positive effect on the hair. So if you have recently lost weight, yes, definitely you will have some hair fall, no matter what your technique of losing weight is. Even if you've been on a very, very healthy diet of protein and salads and fruits and veggies, but still if you've lost weight, you will lose some hair. But still, I will say that for health benefits and for the long term benefit of your hair, it is obviously good that if you are overweight, you need to lose weight and be again in your normal weight range, so that your hormones are under control and your basic metabolism is under control, because all of these things are going to affect the hair also. एग्जैक्टली एक और चीज हम आपसे डॉक्टर बालों को लेकर जानना चाहेंगे, वो ये कि बालों के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें रेमेडी बताया या प्रिस्क्रिप्शन दिया, और या डायग्नोस करने की कोशिश की दैट व्हाई दिस हेयर लॉस इज हैपनिंग, एंड दे विल इवेंचुअली फाइंड आउट दैट देयर इज एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। तो एक तो ये है कि कोई प्रॉब्लम है, वो हो सकता है हमारे हार्मोन्स की वजह से हो, वो हो सकता है हमारे डाइट की वजह से हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और एक वजह ये भी हो सकता है कि हेयर फॉल के बाद हमें पता चले दैट समथिंग बैड इज गोइंग इनसाइड, एक्चुअली वी हैव एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। तो क्या इसलिए भी हम बार बार इस बात को एम्फोसिस दे रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है इन केस ऑफ हेयर लॉस? क्योंकि हो सकता है आप होम रेमेडीज करें, हो सकता है आप कुछ और करने की कोशिश करें, और इसमें आप एक्चुअली डिले करें अपने ट्रीटमेंट को, या ये पता करने में कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक्चुअली ये है कि अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि मोस्ट कॉमन रीजन है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो बहुत बार मैं अपने पेशेंट्स के लिए टेस्ट प्रिस्क्राइब करती हूँ, जिससे कि हमें कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये तो नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा। और अगर फीमेल्स हैं तो उनसे भी मैं प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ कि उनके पीरियड्स कैसे चल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा चल रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी वो हेयर लॉस करेगा। थायराइड अगर इम्बैलेंस है तो भी हेयर लॉस करेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज की, और जो मेरे पास मेल पेशेंट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, मेल्स में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। और वो भी हम चेक कर सकते हैं थ्रू टेस्ट। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अगर हमने आपको कुछ टॉपिकली लगाने के लिए दिया हुआ है, कोई ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो वो भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल जो आपका इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। ऑब्वियसली जो अगर आप खुद अपने घर में कुछ घरेलू नुस्खा कर रहे हैं या मार्केट का कोई एंटी हेयरफॉल शैम्पू करेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क, बिकॉज अंडरलाइन जो थायराइड इम्बैलेंस है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये सब चीजें जब तक करेक्ट नहीं होंगी, तो आपका दुनिया का कोई जो टॉपिकल ट्रीटमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता है। वन रीजन इज दिस कि आपको क्यों डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सेकंड रीजन ये है कि हेयर लॉस जब बहुत लंबे टाइम तक होता रहता है हमारा हेयर फॉल, तो कभी कभी वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है। यानी कि हमने जितने बाल हमने खोए हैं, जरूरी नहीं कि हम वो वापस सारे के सारे हमारे आ जाएं। तो हम जितना टाइम अपना डिले कर रहे हैं एक डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने में, उतना ही टाइम हम अपने बाल हो सकता है परमानेंटली भी खो रहे हो। तो अगर मान लीजिए हमारे लेट अस से 100 बाल है, हमने सोचा चलो ये कर लेते हैं, उतनी देर में 90 हो गए, फिर कुछ और कर लेते हैं, उतनी देर में 80 हो गए, फिर ये कुछ ट्राई कर लिया, फिर कुछ ट्राई कर लिया, करते करते हमारे बाल 100 से 50 पे आ गए। ऐसे टाइम पे अगर आप डॉक्टर पे जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर से 50 से 100 पे आ जाएंगे ट्रीटमेंट से, तो वो नहीं होने वाला। वो 50 से फिर 70 पे ही आ सकते हैं, या मैक्सिमम 80 पे आ सकते हैं, पर वापस 100 पे नहीं जा सकते। तो अगर हमें बाल अपने 100 के 100 पे रखने हैं, तो जब हमें लगता है कि हमारा हेयर फॉल 2-3 महीने से एक्सेसिवली हो रहा है, तो बिना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि हमें लगे कि परमानेंटली और इरिवर्सिबल जो हमारा हेयर लॉस है वो हो गया है। राइट। और डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो फिर क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हेयर लॉस को लेकर अवेलेबल है डॉक्टर? ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑब्वियसली अंडरलाइंग डेफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। नंबर 1 चीज तो वो है। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में मिनॉक्सिडिल है, जो कि एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है।
बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इसका। दूसरी चीजें हैं जैसे पेप्टाइड्स हैं, जैसे कि कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, एनागिन, फिर रिडेंसिल है। तो ये सारी चीजें हैं जो टॉपिकल में हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली मिनॉक्सिडिल इन सब में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और एफडीए अप्रूवल की बात करें तो हमारे पास में सिर्फ मिनॉक्सिडिल का ही एफडीए अप्रूवल है फॉर हेयर लॉस। बट क्योंकि हमारे पास में कभी कभी पेशेंट का फीडबैक आता है कि हाँ ये सीरम अच्छा काम कर रहा है या वो पेप्टाइड अच्छा काम कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर बार साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमें पेशेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे भी ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट कहते हैं कि, और काफी सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ ये जो सीरम है या ये जो लोशन है ये अच्छा काम कर रहा है, हमारा हेयर फॉल कम हो गया, तो फिर हम उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स हो गए। ओरल में ऑब्वियसली मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो जेनेटिक वाला हेयर फॉल है उसमें मेल्स में हम फिनास्ट्राइड देते हैं बहुत कॉमनली। ओरल मिनॉक्सिडिल भी देते हैं। फीमेल्स में जहां तक ओरल की बात आ जाती है तो ओरल स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं, जो कि अगेन एंटी हार्मोनल इन द सेंस की जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन होता है जो बाल को खराब करता है, स्पाइरोनोलैक्टोन उसके अगेंस्ट काम करता है। तो स्पाइरोनोलैक्टोन दे सकते हैं हम, सकते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जिसमें कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें से हमने प्लेटलेट निकाला, प्लेटलेट में से प्रोटीन निकाला, आपके टॉप एरिया ऑफ द स्कैल्प में इंजेक्ट किया, इससे भी आपकी हेयर ग्रोथ होती है। और फाइनली अगर आपका हेयर लॉस का स्टेज इतना बढ़ गया है कि पूरा एक तरह से गंजापन आ गया है या बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है, तो ऐसे केसेस में फिर हेयर ट्रांसप्लांट होता है। ओके। तो तो पेशेंट टू ये तो पेशेंट हमने वेरिएशन है कि किनमें हमने क्या सजेस्ट किया, किसका कितना हेयर लॉस हो चुका है, हेयर थिनिंग है या नहीं, अभी अभी रिसेंटली हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है या कितने टाइम से हेयर फॉल हो रहा है, इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ही हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। right. A lot of things are kept in mind while deciding the line of treatment. We'll also take few of our viewers' question. Dr. Ishita Jha is here asking, how do I know if I'm getting stronger hair? सी बेसिकली अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिन्होंने आपके स्कैल्प का पहले एक ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन किया हुआ है, तो ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन पहले और बाद के में हम फर्क देख सकते हैं आसानी से कि आपका पहले जो था बाल पतला था एंड धीरे धीरे करके विद ट्रीटमेंट इन 6 months टाइम इट हैज बिकम थिकर, प्लस हर फॉलिकुलर यूनिट में जहां पे पहले एक बाल था वहां एक की जगह 2 या 3 आ गए हैं। तो इस तरह से ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम बता पाएंगे कि आपका बाल घना हो गया है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से असेस कर लूं, तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि फीलिंग में जब जब आप अपने बाल में हाथ फेरते हैं तो आपको लगता है वॉल्यूम ज्यादा आ गया है, जो मेरा क्लिप है जो लूज हो गया था वो अब थोड़ा सा टाइट हो गया है, या टूडल जो मैं पहले फिसल के निकल रहा था वो थोड़ा सा फिट आ रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव है। नहाते वक्त कोम्बिंग के टाइम पे आपको हेयर फॉल इतना नहीं दिख रहा जितना पहले दिखता था। अगर ये सारी चीजें हैं तो मतलब जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए चल रहा है दैट इज इफेक्टिव। बहुत लोगों को लगता है कि जहां से मेरी स्किन दिख रही थी पहले, वो स्किन अब मेरी कवर हो गई, अब नहीं दिखती, कॉर्नर्स मेरे बहुत पीछे चले गए थे, वहां पे थोड़े बाल आ गए। तो इन सब तरीकों से आप अपने आप ही जज कर सकते हैं कि हाँ माई हेयर इज गेटिंग बेटर। बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट व्हाट आई जनरली डू इज मैं ट्राइकोस्कोपिक इवैल्यूएशन करती हूँ अपने पेशेंट्स का, एंड उसको फिर हम बिफोर और आफ्टर कंपेयर करते हैं, फोटोज हम ले लेते हैं अपने पेशेंट्स की, उसको बिफोर और आफ्टर कंपेयर कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हाँ द हेयर इज गेटिंग थिकर एंड बेटर। Okay, we'll move on. Shubham Maran है पूछ रहे हैं, how to get rid of split ends? अगेन स्प्लिट एंड्स इज समथिंग डिपेंड करता है कि आपका बाल का टेक्सचर कैसा है। तो जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बहुत कॉमनली बोलती हूँ कि अगर आपका रूट हेल्दी है तो जो वो बाल बनाता है वो भी मोटा, घना और शाइनी बाल होता है। अगर आपका रूट हेल्दी नहीं है तो जो वो बाल बनाता है वो भी ड्राई और ब्रिटल बनाता है। उसी तरह से जैसे अगर फैक्ट्री में डिफेक्ट है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अच्छा नहीं बनता, और अगर फैक्ट्री अच्छी है इट्स वर्किंग फाइन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो स्प्लिट एंड्स अगर आपको बहुत रेगुलरली हो रहे हैं, बाल ब्रिटल हैं, ड्राई हैं, तो वंस अगेन हम सोचते हैं कि हमें बाल पे बहुत कुछ करना है। बाल पे हमें अंडा लगाना है, बाल पे दही लगाना है, बाल पे कंडीशनर लगाना है, बाल पे तेल लगाना है, बाल पे मास्क लगाना है हमें, मगर ये सब हम कर सकते हैं। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर देते हैं वो है डाइट और न्यूट्रिशन। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक आप चाहे ऊपर से जितना मर्जी करते रहें, वो स्प्लिट एंड्स आएंगे, आते रहेंगे, आप उनसे परेशान हो जाओगे, तो ठीक नहीं होगा।
तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमें अपना न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली आज की जनरेशन में हम ये नहीं सोच सकते कि हम कभी भी बाहर खाएंगे ही नहीं या जंक फूड खाएंगे ही नहीं, बट हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि एक दिन हम रख लें हफ्ते में कि हाँ मैं सैटरडे बाहर का खाऊंगा या संडे बाहर का खाऊंगा या फ्राइडे। हम सोचे रोज ही बाहर का, रोज ही हमें सब्जी नहीं खानी, रोज ही फल नहीं खाने, तो दैट विल नॉट वर्क एंड देन स्प्लिट एंड्स विल नॉट बी ट्रीटेबल। करेंटली जो स्प्लिट एंड्स है उनको हम ट्रिम कर सकते हैं, कंडीशनर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम टेम्परेली हम कर सकते हैं टू मैनेज दो स्प्लिट एंड्स। बट इन द लॉन्ग रन अगर हम चाहिए कि हमारे बाल इतने हेल्दी होने चाहिए कि स्प्लिट एंड्स हो ही ना, तो अगेन हमें अपनी फैक्ट्री को इम्प्रूव करना है, हमें अपने रूट्स को इम्प्रूव करना है। That's the main thing. ओके, कंडीशनर एंड वॉशिंग से रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, वो भी मैं ले लेती हूँ। साधना सिंह पूछ रही है हाउ मेनी टाइम्स अ वीक शुड यू वॉश योर हेयर। ईना मिश्रा है पूछ रही है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज हेयर कंडीशनर। वॉशिंग हेयर टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ ऑयली योर स्कैल्प इज। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप रोज भी हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो वंस अ वीक इज ऑल्सो इनफ। सो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके बाल का टेक्सचर कैसा है। डैंड्रफ है तो अगेन हम सजेस्ट करते हैं कि ऑल्टरनेट डेज आपको हेड वॉश करना चाहिए। कंडीशनर की जहां तक बात है, अगेन आपके हेयर टेक्सचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के बाल की जो नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है थोड़ा सा कर्ली या ब्रिटल या थोड़ा सा फ्रिजी। तो ऐसे में कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी नहीं लगाएंगे। कंडीशनर क्या कर रहा है बेसिकली, इट इज अ मॉइस्चराइजर फॉर हेयर। जैसे हम मॉइस्चराइजर स्किन पे लगाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है, खरोच नहीं आती, डैमेज नहीं होती। उसी तरह से कंडीशनर या ऑयल जो है एक परत बनाते हैं हमारे बाल पे, जो कि हमारे बाल को ब्रेकेज से बचाते हैं। हम क्लचर लगा रहे हैं, क्लिप्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं बाल, ये सब हो रहे हैं, तो ऐसे में हम हमारे बाल के पास में प्रोटेक्टिव कवरिंग है। उसी तरह से जैसे मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को बचाता है, वैसी कंडीशनर हमारे बाल को बचाता है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगेन डिपेंड करता है कि आपके बाल कितने ड्राई या फ्रिजी है। अगर ऑयली स्कैल्प है, बाल सिल्की हैं बहुत ज्यादा, तो कंडीशनर लगाने से और ज्यादा वो सिल्की और लिम्प हो जाएंगे, मतलब वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। राइट। तो अगर बाल फ्रिजी हैं तो कंडीशनर लगाइए। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो मेन जनरली जो लड़के हैं वो नहीं प्रेफर करते कंडीशनर, क्योंकि उससे उनके बाल बहुत सिल्की होते, गिरते रहते हैं, सेट नहीं रहते बाल। तो सबकी प्रेफरेंस अलग है। अगर आपको चाहिए कि आपके बाल थोड़े से सिल्की और स्ट्रेट रहें, बाल लंबे हैं तो कंडीशनर लगाइए, बाल छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसको लगाएं। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर का हम ले लेंगे। माया सिंह है पूछ रही है मैम हेयर कलर से हेयर वाइट हो रहे हैं, प्लीज बताएं वाइटनेस कम हो जाए। अगेन हेयर कलर से बाल वाइट नहीं होते। हमारे जो रूट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलीमीटर बिलो द स्किन। तो ऊपर से लगाया हुआ हेयर कलर या शैम्पू ना ही हेयर फॉल करता है, ना ही हेयर ग्रे करता है, ना ही हेयर को बचा सकता है। वो हेयर फॉल नहीं बचा। किसी लोग पूछते हैं शैम्पू से हेयर फॉल, कौन से शैम्पू से हेयर फॉल रुक जाएगा? किसी भी शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रुक सकता। तो जो हमारा रूट है वो बहुत गहरा है और उस डेप्थ पे हमारे कुछ सेल्स हैं जो हमारे रूट में कलर बनाते हैं। तो जो हम बाल के ऊपर कलर लगाते हैं वो हमारे रूट के डेप्थ तक पहुंच ही नहीं रहा। तो किसी भी तरह से वो हमारे उन सेल्स को, जिसको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, उन सेल्स को वो डैमेज नहीं कर सकता, उन सेल्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। सो डोंट वरी कि आपके कलर से बाल व्हाइट हो रहे हैं, वो वैसे भी व्हाइट होने ही थे। ये एक कोइंसिडेंस है कि आप कलर भी लगा रहे हैं, साथ में आपके बाल और ग्रे होते जा रहे हैं, बट कलर की वजह से बाल ग्रे नहीं होते। सो जस्ट यू कैन कंटिन्यू यूजिंग योर कलर, डोंट वरी, जस्ट मेक श्योर कि आपका कलर अमोनिया और पीपीडी फ्री होना चाहिए, दैट इज इट। और कम से कम टाइम के लिए लगाइए कलर, ज्यादा लंबे टाइम तक हमें अपने बाल पे नहीं छोड़ना है। और एक चीज है, कलर में लाइट कलर वाले जो शेड्स होते हैं, ब्लॉन्ड टाइप के जो शेड्स कलर्स होते हैं, वो बाल को ज्यादा बर्न करते हैं, ज्यादा ड्राई करते हैं। तो अगर आपको कलरिंग कलर चूज करना है ग्लोबल कलरिंग के लिए, स्टीक्स के लिए, कोशिश करिए कि थोड़े से डार्कर शेड्स चूज करें। Okay, and before we wind up doctor, any takeaway message for our viewers? ओनली सिंगल मैसेज इज दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये शैम्पू कर लेंगे तो इससे बाल बेटर हो जाएगा। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपके बाल अच्छे हैं क्या, कौन से शैम्पू यूज करते हो? सो आई टेल देम हार्डली मैटर्स। आई डोंट इवन नो कि मेरे बाथरूम में कौन सा शैम्पू रखा है, मैं कौन से शैम्पू यूज करती हूँ, आई हैव नो आइडिया। बट आई डू नो व्हाट आई एम ईटिंग एंड दैट इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। You have to take care of your diet. That is what will reflect on your skin, on your hair, on your body, on your general health. हर चीज में आपका खाना ही काम कर रहा है ले दे के।
तो डोंट वरी कि मैं क्या बाल पे लगाऊं, लगाने से ज्यादा खाने पे ध्यान दीजिए. That's the only single most important message that I want to give to my viewers. That was very informative. So क्या लगाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आप खा रहे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो प्लीज अपने खाने पे ध्यान दीजिए. Eat right, eat healthy. Thank you so very much, Dr. Urvashi. It was lovely talking to you. Thank you for your valuable guidance on how to keep our hair healthy. And thank you, viewers, for joining us. It was a very active participation that you all showed. Thank you so very much. And if you want to get personal consultation from Dr. Urvashi Chandra, then you can visit Chandra Skin Clinic 12, Radhani Enclave. Radhani Enclave is the That is right. Rajdhani Enclave, Pitampura. Rajdhani Enclave. Landmark is near Par Chowk and Agrawal Sweet and Shiv Mandir. Correct. Okay. And yeah, and Rani Viewers Bagh. can Google Chandra Clinic and they will be able to get all the information. Exactly. So just surf about that, Chandra Skin Clinic. You'll get the address. You can go and consult Dr. Urvashi. And please go and consult your doctor in case you have, abnormal hair fall or hair loss. Thank you so very much once again, Dr. Urvashi Chandra, for joining us. And thank you, viewers, for your active participation. For any hair-related concern, you can stay connected with our YouTube channel, Hair All Issues Resolved. Thank you. Goodbye. Goodbye.